Hello dear students. Now in this class we have discussed another disease or another viral disease which is known as common cold. Here which is called as common cold. Hela nahi ame dekhithile we can completed your syllabus diseases like typhoid, pneumonia, that are the bacterial disease. Now we have start a viral disease which is called as common cold. Generally all the peoples are one by one, all the peoples are suffering from the common cold in one day, but they are taking the different type of medicines. But there is no exact medicines for the treatment of common cold because it is a one type of viral disease. Okay, let's start. What is the common cold and what are the causative organism of common cold? What are the symptoms of common cold and how we can treatment the common cold? Okay, तो देखो कौन कहला common cold. तो common cold है गोटे one type of viral disease. एटा है गोटे one type of viral disease. That means the different type of virus when they will be enter in our body, they can cause the common cold. Generally in rain season, winter season, this disease is common for the peoples. Okay, the main causative organism of the common cold is the rhinovirus. Okay, so main causative organism of the common cold. Eta gote viral disease, but there are 100 types of virus are present. They are also causing the common cold to the human being, but out of them, the rhinovirus is the main causative organism for the common cold. So देखो कौन कहला पिले causative organism कौन देला? It is a viral disease caused due to the different type of viruses. एइटा हला गोटे वन टाइप रो वायरल डिजीज जो वायरल डिजीज टा की कोन होची विभिन्न प्रकार भाइरस मानक द्वारा जदी गोटे पर्सन जदी affected heichi or the different type of virus will be injected or the pathogens will be injected into the body, then it can causes the common cold. So the different type of virus, the main virus which can cause to the common cold to the humans, that is the rhinovirus. The main causative organism is the rhinovirus and some other viruses like coronavirus. Now this is the main pandemic situation in all over the world, or and the people are think about the coronavirus will be invented in the year of 2019, so that they give the name that is the COVID-19. But the coronavirus is discovered in so many years back, but so nowadays this is the main pandemic situation. So the rhinovirus, coronavirus, but this corona and nowadays the corona, the main difference is that their protoplasmic layer. तार जो प्रोटोप्लाज्मिक लेयर टा अछि, बट ए जो कोरोना थिला एयर प्रोटोप्लाज्मिक लेयर टा स्लाइटली थिनर, बट नाउअडेज द pandemic situation, the coronavirus which have the main the protoplasmic layer is more thicker than this one, so that the different type of medicine will not injected that protoplasmic layer, or they not penetrate into them, so that it can cause severe to the human being and it can cause the level of the oxygen will be decreases into the body and it can damage the lungs. But generally the common cold disease or the rhinovirus not goes into the lungs. এই जो common cold रो जो disease टा अछि एटा से माने lungs जाई परिबेनी, माने lungs रो जो हमर जो alveoli mainly it like the pneumonia रे हम already discussion करि सारते, ए माने हमर maximumly कोन हले nasal cavity देई गले trachea हला नै and the bronchi हला नै ए तीरे मान रहि जिवे. बट एमाने वर्तमान कोन करछन जो कोरोना भाइरस जोडा अछि इट विल बी गोज इनटू द लंग्स. तो प्राय कोथे लोक माने अरे एटा हमर ए पाखर पर्सन रे 4 दिन रु 5 दिन रु ए पाखर पर्सन माने कोन ट्रैके हला नै. तो एठे माने सिवियर मेनली ए सब सागर रहंती, बट जेतले कि व्हेन दे विल बी गोज इनटू द लंग मु कहिबी चांसेस नाही कोन चांसेस अछि लंग्स को जिबार, बट very rare case रे rhinovirus ता जोटा कि हमरा alveoli को जाके डैमेज करिवो, जोटा कि हमरा ऑक्सीजन लेवल कमे दोछि. बट ए जो कोरोना भाइरस हमर जनरली वर्तमान कोन होछि हमर ऑक्सीजन जो लेवल ता रहउछि सेटा ये कमे दोछि. काहे कि कमे दोछि वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन आवर pneumonia video हला नै, because the diffusion of the oxygen does not take place into the blood, so that the number of deoxygenation will causes death to the organism. Okay, let's leave that topic, but we can go for the common cold.
such as the different type of rhinovirus, coronavirus, adenovirus, ecovirus, para paramyxovirus. These are the different type of virus which can cause to common cold. এই সব ভাইরাস যাকে আমরা কোন করନ୍ତି generally common cold করନ୍ତି। এই যে common cold কোন হচ্ছে, these are the virus are present in our environment। এই যে outer environment এটা present থাউজন when we can inhale or we can intake the contaminated food or the water, they will be goes into our body and they can causes common cold to us। The main causative organism is the rhinovirus। Next, what are the symptoms? If the common cold will be shown into a person body or a person will be suffering from the common cold, then what are the different type of symptoms? कौन सेमानकर symptoms देखा जाए body रे? Generally, the main symptom for the common cold is the running nose। running nose माने कौन? नाकड़ा कौन धाइव ना कौन? ना नाकरु कौन होचे हमरा? The liquid substance, that is the mucus, will be secreted rapidly continuously। running nose, sore throat, so gargling करिया माने संखी बथा होछ बोली कोच हमें throat is paining, okay, sore throat और संगे सुखी वाला बेला लागुछ बोली कोच sore throat, running nose, mucus building in the nose। nose रे हमर कोन होछ mucus building ही जाउछ, the number of mucus layer will be thicker so that it can problem to inhale us। निश्वास प्रश्वास नबारे हमको समस्या देखा जाए बा हमको कठिन लागे बा कष्ट लागे, तो एटा होछ हमर ड्यू टू दी mucus building in our nose। mucus layer ता हमर जो बिल्डिंग होची सेटा बा mucus ता हमर थिकर लेयर फॉर्मेशन हो जाउची, जा फल रे हम कोन होची इनहेलेशन करिवार प्रॉब्लम होची। नेक्स्ट, डिफिकल्टी इन द ब्रीथिंग ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ mucus layer। mucus layer जेतु फॉर्मेशन हो जाउची हमको डिफिकल्टी होची हमर ब्रीथिंग करिवारे। नेक्स्ट सिम्पटम इज द स्नीजिंग, छिंक हुए हम ओडियर कोन बोलछ स्नीजिंग, छिंक से हमें बहुत टाइम स्नीजिंग, हेडेक, मुंड बथा, टाइटनेस। जनरली हमें कहूचे चलो हम ठंडा माने मते माने बॉडी एक टाइटनेस जा फल पिला ने कहबे बा कॉमन कोल्ड इज पर्सन आज मते किछ काम करबा ठीक लागोनी मु जाई सोई पड़। आम तो प्राय पिला ने कहउछन एबे तो टाइम चलछि समस्त सोचंदी, बट एई जो समय रे हमर कोन होय जनरली हमको टाइट फील हुए, बॉडी एक देखा जाए, दैट मीन्स द ऑक्सीजन लेवल जतल कि हमर बॉडी रो डिफरेंट टाइप ऑफ मसल्स जाको कहबे हमको एनर्जी दरकार एई समय जेहेतु बॉडी रो लेवल ऑक्सीजन लेवल ठीक कम जाय थाए सेति पय बोली कि एटा हमको टाइट लागे, टाइटनेस। नेक्स्ट इज द फीवर। Generally, the body temperature will be increases up to the 102 degree Fahrenheit. Okay, so these are the different type of symptoms which will be viewed in case of our body due to the common cold। common cold ପାଇଁ ଏ ସବୁ ଯାକ ହେଲା ଆମର different type of symptoms, general symptoms। all the people are suffering this type of disease or the common cold in a one day। ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଦିନ in the life span ଭିତରେ ଆମେ suffering ହେଇଥିବା ଏ ପ୍ରକାର ଇଏରେ, ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି କି it is a common diseases। ତ ଏଇଟା ହେଲା different type of symptoms। नेक्स्ट आसला प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। एई जो डिजीज रो हमें प्रिवेंशन किमिति करि परिया बा एई जो डिजीज को हमें कंट्रोल कि भलिया करि परिया कोन कहला, नोज शुड बी प्रोटेक्टेड विथ हैंड और एनी नैपकिन। एई जो हमर जो नाकटा ड्यू टू द रनिंग नोज, एई जो हमर एटा कोन बोली पाजे रनिंग नोज जेतु होची द म्यूकस लेयर व्हेन इट विल बी ड्रॉप इनटू द एनीवेयर, देन द डिजीज विल बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम द वन पर्सन टू अनदर पर्सन बिकॉज़ द कॉमन कोल्ड इज ए कम्युनिकेबल डिजीज। एटा गोटे वन टाइप ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज जेतु गोटे पर्सन रो अन्य पर्सन को ट्रांसफर होबा चांस अछि। सेति पय बोली हम कोन करिया, वी शुड कैप और वी शुड प्रोटेक्ट आवर नोज with the hand। आमर hand द्वारा हमें ये नाकटा कोन करिया घोड़े रखिबा और by the napkins when at the time of sneezing or when the time of talking हला नै। सेति पय बोली हमें सब बेले कोन करिया जे हमर जो वर्तमान जोडा मध्ये हमें करूचे कोन करते nose and mouth रा हमें क्लोज कर रखिबा by the help of napkins or by any type of or by the hand or by the mask। okay, next asla avoid direct contact with the infected portion। infected portion को हमें direct contact, that means the portion that will be used the different materials for the protecting the nose or the mouth, माने ता न जे हमें ता संगे मिसिबानी ताको छुईबानी सेमिति किछ नै। ये जो जिंस द materials that will be used to protect by the nose or like mask or the any rumals or the napkins, that we should prevent or we not touch that materials। सेही सब materials के हमें टच करिबा नाही। avoid direct contact with the infected person। infected person रो जो materials दाको से जो यूज करूची सेटा को हम यूज करिबानी, कारण सेथिरे मध्ये भाइरस ता से when at the time of sneezing से जो छिंकी थिबो सेथिरे से भाइरस ता रही थाए, तो सेति पय बोली हम सेटा को डायरेक्ट टच करिबा नाही। नेक्स्ट असला द पर्सनल सैनिटेशन बिफोर टेकिंग फूड।
Before taking food, the main precaution is the personal sanitation, जोटा कि हमें सैनिटाइज होते बाय द डिफरेंट टाइप ऑफ अल्कोहल हला ने एई जो प्रकार हमें पर्सनल सैनिटेशन माने पर्सनली सफा सुतरा रहबा खाइबा पूर्व हमें कोन करिया वी शुड क्लीन आवर हैंड विथ द हैंड वॉश और बाय द एनी सान वी कैन सैनिटाइज आवर हैंड एंड वी कैन the personal sanitation and hygienic before the taking different type of foods. Next, treatment. If a person will be suffering from common cold, there is no cure for the common cold or no particular medicine for the common cold. Common cold ପାଇଁ ବୋଲି ସେମିତି କିଛି particular medicine ନାହିଁ, but the symptoms can be reduced. जो symptom जाक अछि से जो symptom जाक किछि मात्रा रे हमरो reduce हेई पारिबो, but generally due to it is a one type of viral disease, सेति ପାଇଁ ବୋଲି कि vaccination is the best method. But when a person will be suffering from common cold, generally the incubation, after the incubation period, they will be suffering from 2 to 3 days. 2 ରୁ 3 दिन पर्यंत एटा हम देहरे प्राय रुहंती. After the formation of antibody in our body or in our blood, then this disease or the symptoms will be decreases or the we can cure from this type of disease. So kon gele next asla amar treatment. There is no cure for the common cold, but the symptomatic treatment can be provided like gargling. है ना एटार सेमिति किछि पर्टिकुलर मेडिसिन नाही माने पर्टिकुलरली कॉमन कोल्ड पाई, बट तार जो सिम्पटम्स बा सिम्पटोमेटिक जोटा देखा जाए सेटा को हमें किछि मात्रा रे वी कैन रिड्यूस दैट लाइक बाय टेकिंग द गार्गलिंग. हमें गार्गलिंग करबा बाय द सलाइन वाटर माने कोन लुणिया पानी बा लुण पानी किछि हॉट वाटर रे किछि वार्म वाटर, नॉट द हॉट वाटर, बाय द वार्म वाटर वी शुड डू द गार्गलिंग फॉर द सोर थ्रोट. इज अ सोर सिम्पटम्स रे थिला देखो सोर थ्रोट, ए जो सोर थ्रोट रो जो हमर जो माने सिम्पटम्स को हम रिड्यूस करिया पय बोली कि वी शुड गार्गलिंग विथ सलाइन वाटर और द इन द वार्म वाटर. नेक्स्ट असला नाजल डिकॉन्जिनेंट और द नाजल स्प्रे और द नाजल ड्रॉप टू रिड्यूस द म्यूकस लेयर दैट विल बी प्रिवेंटेड फॉर द नाजल for the difficulty in breathing. जेहेतु हमर difficulty in breathing देखा होतला सेति पे बोली हमें किछि nasal spray बा nasal decongestant यूज करबा बा nasal drops पकेबा जोटा कोन करछि which will be relieved from the nasal symptoms. nasal रो माने नाको संबंधी बा रेस्पिरेशन पई जोटा कि nasal cavity रे जहा प्रॉब्लम थिला सेही सिम्पटम्स रो एटा टिके हमको रिलीफ दे पारियो. नेक्स्ट यूज करबा हमें डिफरेंट टाइप ऑफ एनाल्जेसिक ड्रग्स. एनाल्जेसिक ड्रग माने कोन सर, जो द ड्रग which will be reduce the pain of the headache, head और body pain रो जो जाक pain relief जोटा करंती सेटा को हमें जनरली ड्रग क्लासिफिकेशन रे हमें एनाल्जेसिक ड्रग्स बोली कहउछे से सब को. तो एटा नेक्स्ट असला हमर एनाल्जेसिक कैन बी यूज्ड टू रिलीफ नाजल हेडेक एंड बॉडी एक. एटा हमर कोन करछे जनरली हमर which can relieve body एक हला. तो ये जो एनाल्जेसिक मेडिसिन कोन करे जनरली इट कैन रिलीफ टू द हेडेक मुंड बथा बा बॉडी एक. इट कैन रिलीफ फ्रॉम आवर सम relieve some pain from the body. हमर बॉडी रो किछ पेन रिलीफ करिया पय बोली कि हमें एनाल्जेसिक ड्रग्स दे नै परिबा. और if the body temperature due to this common cold the body temperature will be increases, जेहेतु एटा पय बोली कि हमर बॉडी टेम्परेचर ता increase हे जाई थाबे बा हम फीवर हेच बोली हमें कहते to reduce that symptom we can take different type of antipyretic drugs. हमें सेति पय बोली कि एंटीपायरेटिक ड्रग ई सब एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक ए सब जगह तमरो अछि हेल्थ एंड डिजीज रे ड्रग्स रो क्लासिफिकेशन जतो आछियो वी कैन स्टडी द ड्रग क्लासिफिकेशन. सब ड्रग जगह हमें सिना कहि दोते जरो मेडिसिन खासो मेडिसिन बट माने फीवर पय मेडिसिन ये पय बट दे हैव द सम स्पेसिफिक नेम और ए स्पेसिफिक ड्रग लाइक एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक. तो सर एंटीपायरेटिक कोन एंटीपायरेटिक ड्रग लाइक पैरासिटामोल we should take to relieve or to reduce the fever reduce or the body temperature जो increase हे जाइछो से जो body temperature को टिके reduce करबा पई हमें जो ड्रग ता नबा ताको हमें एंटीपायरेटिक ड्रग बोली कहता like paracetamol we should take. It can helpful for the prevention from the fever or from the or to maintain the body temperature को maintain करिया पई बोली कि हमें नबा. So these are the different type of treatments or these are the different type of precautions that we should take to relieve from the common cold. एई सब जाकला हमर कोन जे precaution नबा हमें common cold रो relief आइबा पई. So this is all about your common cold. एटा घुसवा किछि आवश्यक नाही. ओवरऑली तमे मन रखो because we are all are suffering from common cold. सेति पय बोली हमर सिम्पटम्स हमें कहि दे परबा इजीली. ड्रग्स जाक भीतर दीटा खाली मन रखियो एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक तापर तो गार्गलिंग कॉमन जोडा गार्गलिंग हला नै. नेक्स्ट असला नाजल स्प्रे और द नाजल डिकॉन्जिनेंट्स एंड द नाजल ड्रॉप शुड बी
टेकिंग तो सिम्पटम्स जाक तो तुम जानिछ ऑलरेडी तो एटा घुसिबार किछि आवश्यक नै सब जिंस हम कोन करे इजीली हमें वन बाय वन स्टेप चारटा स्टेप रहउछि कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म सिम्पटम्स प्रिवेंशन कंट्रोल ट्रीटमेंट एटा को हमें ओवरऑली मन रखिबा दिस इज ऑल अबाउट योर कॉमन कोल्ड और इट इज ए वन टाइप ऑफ वायरल डिजीज हमें डिजीज रो क्लासिफिकेशन करथिले बैक्टीरियल डिजीज रे हम जाइतला टाइफाइड निमोनिया से दिरा सला पर नेक्स्ट थिला हमर वायरल डिजीज भाइरस रो जोडा फास्ट हमें कोन को पढिले कॉमन कोल्ड तापर धीरे धीरे तुम सिलेबस रे जहा किछि गोटे गोटे डिजीज अछि से सब विषय पढिबा तापर नेक्स्ट हमर अछि इम्यूनो सिस्टम मध्ये पढिबा तापर हमर ड्रग क्लासिफिकेशन अछि बस ए जो टोटल हमर जो सिलेबस रो टॉपिक ता एतिक अछि तो सला तमरो कॉमन कोल्ड पिला माने बेस्ट होबो तमे देखि कि फर्स्ट नोट बनै दवाटा बेटर ओके थैंक यू